Good morning, students. Good morning to all my dear students of class 11 science. So please welcome back. Join the class as already link I have sent to you in our group. So in our today's lecture, what we are going to discuss. If you remember that yesterday we discussed the relationship between Kp and Kc. In our yesterday lecture, we discussed the relation between the equilibrium constant and the pressure constant at the equilibrium. And what the formula or the relation we got? The relation we got Kp is equal to Kc into RT power delta X. Okay, this is the relation we got yesterday. That is the relation between Kp and Kc. Okay, where what is the delta X? The delta X is the number of the moles of the product minus number of the moles of the reactant. So delta X is the difference between the number of the moles of the product and number of the moles of the reactant. Okay, now after that we will discuss the three cases today. Based on that relation, the three cases are there. यहाँ पे तीन केस बनते हैं. Case 1, case 2 and case 3. And what are the three cases? ये क्या है देखो. The three cases are there. बहुत आसान सी बात है. Is basically we were going to discuss that when Kp and Kc are equal, when the differences are there, when the Kp will be greater than, and when the Kc will be the more. This topic we are going to discuss right now. Okay. So now all these things basically depends upon the difference between the number of the moles of the product and the reactant. Means if number of moles of the product is greater than number of the moles of the reactant. ठीक, कोई भी ऐसा रिएक्शन ले लिया जहां पे नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट ज्यादा हो गए और रिएक्टेंट कम हो गए. फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग दैट PCl5 का अगर आपने डिकम्पोजिशन किया है तो क्या बनता है PCl3 plus Cl2. Okay, so what are the number of the moles of the reactant? Those are 1 and number of the moles of the products are 2 because 1 and 1 2 are there. So in this condition, the first condition verified, number of the moles of the product are more, and if the number of the moles of the product are more, तो हर बार क्या होगा, delta x की जो power ये आएगा ना, always the delta x will be the positive, क्योंकि ज्यादा से कम घटाओगे तो पॉजिटिव में रिजल्ट्स आएंगे, तो डेल्टा x का जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, है ना. इट मींस दैट, सो दैट इज इन दिस कंडीशन इसका मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी. It means that Kp is greater than Kc. Okay, so if the number of the moles of the product are greater than the number of the moles of the reactant, so what will happen? इस अब यहाँ Kc का कुछ वैल्यू होगा, फिर ये भी कुछ वैल्यू आएगा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू बहुत बड़ी आ जाएगी. It means that in this condition Kp will always be greater than Kc. Okay, now the case second, what will happen? In the case second, if Np is less than Nr, okay, number of the moles of the products are less as compared to the number of the moles of the this particular reactant is there. ऐसा कोई रिएक्शन आ गया जहां पे नंबर ऑफ द मोल्स हमारे रिएक्टेंट कम है और नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट ज्यादा है. ठीक है ना, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कम बन गया, रिएक्टेंट ज्यादा हो गए. सो लाइक दैट ऐसा भी हो सकता है. ठीक है ना. सो इन दिस कंडीशन व्हाट विल हैपन, दैट इज Kp is less than Kc. यहां पर Kp का वैल्यू Kc से छोटा हो जाएगा, क्योंकि अगर ये प्रोडक्ट कम हो गए तो ये माइनस में रिजल्ट आएगा. इट मींस दैट डेल्टा x विल बी नेगेटिव, ये नेगेटिव होगा. इस कंडीशन पे डेल्टा x पॉजिटिव होगा, एंड इफ द डेल्टा x आता नेगेटिव देन व्हाट विल हैपन, वैल्यू विल बी लेस, वैल्यू कम हो जाएगा. सो Kp इज लेस देन Kc. द केस वन ऑलरेडी वी हैड डिस्कस यस्टरडे. इफ द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट आर द equal to the number of the moles of the reactant, so then what will happen? Anybody can text? Anybody can? Yesterday already we had discussed, when the number of the moles of the product and the reactant are the same, then what the relation you got? Anybody can text? Under this condition, what the relation you will get? Any one of you? When the number of the moles of the product and reactant are same. Yes, very good, Ashutosh. So that is Kp is equal to Kc, ये बराबर आ जाएगा, क्योंकि यहां पर डेल्टा x का वैल्यू 0 होगा.
है ना? वेरी गुड, शाबाश. So the student, those who are writing the answer, Ashutosh, Shanika, Tanvi, Riya and Kalyani, they gave the right answer. Mayur also, Bhushan, very good. Those condition पे KP KC हमारा बराबर हो जाएगा. So this is also the cases. 3 cases are there. Take when the KP is greater than, when the KC is more, and when they both are equal. Okay. Okay. So is this part okay to everybody? Should we move forward? एक numerical लगवा दिया जाए. Good, Shiman. इतना समझ में आ गया? Is it okay to everyone? Text me. Is this okay to everybody? Please text me. Okay, good, Sabash. Now, so the next topic is, okay, good, very good. The next one is, now we are going to discuss one numerical based on that, है ना? अब इस पर बेस्ड एक numerical पर सॉल्व करते हैं. It is also very much important. Now, the next numerical based on that, suppose, chalo, we are going to discuss first one question is, at 773 Kelvin is the one numerical. At 773 Kelvin इस particular temperature पे कोई एक reaction है, the equilibrium constant Kc is given, and what is the value? The value of the Kc is given 6.02 into 10 to the power minus 2 liter square mole minus 2. Liter square mole minus 2. And the reaction already given. Again, the formation of the ammonia is given only. Ammonia का ही formation है. So N2 plus 3H2 reversible 2NH3. Okay. So the Kc is given to us. Calculate Kp. Now you have to calculate the value of Kp. Calculate the value of Kp. Now this part we have to solve. Okay. चलो भाई solve करो. तो चलो पहला क्वेश्चन मैं बताता हूं कैसे लगाओगे आप. So what is the relation? The relation Kp is equal to Kc into RT power delta x. ठीक है. First of all we have to find the value of the delta x. So delta x is equal to Np minus Nr. How many moles of the product? The number of the moles of the products are the 2 and the number of the moles of the reactant are the 4. So delta x का वैल्यू कितना आ गया? -2 है ना. The value of the delta x came -2. ठीक. चलो वैल्यू पुट कर दो. वैल्यू पुट कर दोगे तो Kp is equal to, what is the value of Kc? 6.02 into 10 to the power -2. Then what is the value of R? 8.314 into temperature is 773 और डेल्टा x का वैल्यू कितना है? -2 है ना. डेल्टा x का जो वैल्यू है हो गया -2. अच्छा एक मिनट, लीटर में वैल्यू दिया है तो R का जो वैल्यू आएगा that is 0.083. ऐसा लगा 0.083. Value of the R is very much important over here. So value of the R will be 0.0821 or the approximate 0.083. We can keep over there. ये R का वैल्यू हो जाएगा 0.083 क्योंकि लीटर मोल्स में दिया है ना. So that is the value of R and then you have to solve it. अब इसको solve करना पड़ेगा. Solve कर देंगे तो ये हो जाएगा 6.02 into 10 to the power -2 into 1 upon 0.083 into 773 का square. है ना. Now anybody can text me the answer. Any one of you can text me what the answer will come. You can also use a calculator because I don't have the answer right now. I have to search. Answer is given. I got the answer. Answer is 1.5 into 10 to the power -5 atm. ये 4 हो जाएगा -2. This is the answer.
Kp is equal to 1.5 into 10 to the power minus 5 atm minus 2. Now my dear, values and the unit are very much important. Unit बहुत ध्यान रखना बहुत जरूरी चीज है. So this is the value of the Kp will come. Is it okay to everybody? Is the first question okay to everybody? Are you ready to solve one more question? Okay. Now, so the next question, should we move forward? Is this question okay to everyone? Please give me a thumb expression. Or what? Okay, good. Now, so the next question I am going to give for you. है ना, अगला क्वेश्चन अब आप सॉल्व करो. Because the first question I told you कि how we have to solve, how we have to put the value. R always 0.083. वैसे तो 0.0821 होता है R का वैल्यू exactly, but इसका approximate 0.083 के approximate आप रख सकते हो. Okay. So Preeti Bhagat is with us. Okay, Preeti, good morning, but I think you joined late. Okay. Today I think Aditi Divase is not with us. Aditi Divase, Preeti Bhagat, Shravani, कुछ बच्चे हैं जो नहीं आ रहे रेगुलर. Okay, so one question I am going to give you, उसको solve करो. Second question for you people. Kp for reaction. इस बार Kp दे रहा हूं. इस बार Kp given होगा, Kc find out करना है. Kp for the reaction is N2O4 gaseous phase reversible 2NO2, and the Kp for the reaction, Kp is given 0.157. The Kp is given this time. Okay, Ardeep, no problem. So Kp is given 0.157 atm at 27 degrees Celsius. है ना, Kp दिया भाई 27 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure. And 1 atmospheric pressure. Calculate Kc. Now everybody please try to solve it. इस बार solve करो, क्या आंसर आएगा? Find out the value of Kc. What will be the value of the Kc for this time? This time the Kp is given, equation is given. You have to find the value of the Kc. I am giving the 1 minute to you. Please try to solve it. Value बताओ भाई क्या आएगा? R again the same. R आप same रखोगे. R value of the R is 0.0821 or approximate 0.083 आप ले सकते हो. No issue. है ना? Actually हर बार R हम ये क्यों रखते हैं? Because whenever the we have to find the value of the R in the atmospheric pressure, तो ये same value होता है ना? ये जो R का वैल्यू होता है ना, वो होता है लीटर. मैं लिख दे रहा हूं. R is equal to 0.0821 liter atm inverse mole inverse. So that's why the value of the R always we have to keep like this. अच्छा, टेम्परेचर भी रहेगा तो Kelvin inverse. Anyone has got the answer? Anyone has got the answer? No one. So many students have joined. Any one of you please text me what will be the answer. Yes, very good. Ashutosh got the answer. 6.3 into 10 to the power minus 3. Very good. And Ashutosh, what will be the unit? Ashutosh saying what will be the unit of that? The unit is very much important over here. What will be the unit? And others also please.
Other student, you also please text me what will be the answer. Kp is equal to Kc into RT पावर डेल्टा x, है ना। तो इस बार क्या है, Kc फाइंड करना है, तो Kc इज इक्वल टू Kp अपॉन RT पावर डेल्टा x। Kp इज ऑलरेडी गिवन, Kp गिवन है, कितना गिवन है 0.157 अपॉन R कितना हो जाएगा 0.083 अप्रोक्सीमेट, टेम्परेचर कितना दिया है 27, so we have to convert it to the Kelvin, so 300 Kelvin, and what will be the delta x, Np minus Nr 1 power 1, so Kc is equal to 0.157 upon 3 3 is 9, 3 8 is 24, है ना, ये तो 0 and 3, so 24.9, so Kc is equal to 0.157 upon 24.9. Yes, very good. So now the students are absolutely right. That is mole per liter. Very good. So Riya, Uday, Asutosh, Uday, अच्छा उदय ने यूनिट दिया है बाद में. Very good. Sanika and Anam. Very good. So the answer will be Kc is equal to 6.3 into 10 to the power minus 3 mole per liter. This is the answer. This is the answer. What about Tanvi, Nidhi, then Sanskruti, Prakhar, Vineet, another student, please. Have you got the answer? Have all of you got the answer? Okay. Good. Now, so this was the entire topic, that what is the relation between Kp and Kc will come and how we have to solve the numerical based on that. ठीक है, इस चैप्टर को जब आप पढ़ते हो बेटा इक्विलिब्रियम को, तो इक्विलिब्रियम में दो पार्ट हैं. You remember that when I was taking the first lecture of this particular chapter, when I told you the two topics are there. This chapter can be divided into the two parts. The first part is the chemical equilibrium and the second one is ionic equilibrium. So in the chemical equilibrium, one topic is left. अगर थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा थ्योरी का मामला आ रहा है तो बहुत ध्यान से समझना है. क्या है मामला कि now the question is that कि how we can change the equilibrium. What are the factors, है ना? Now we have to discuss those factors which can shift the equilibrium. मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि अभी आप देखते हो कि कोई भी सपोज अभी आपने जस्ट अभी क्वेश्चन सॉल्व किया, वो पूरा question that was happening at what temperature 27 degrees Celsius. Just now you solve the one numerical, and in that numerical you got that equilibrium occurs at 27 degrees Celsius. Now my question is that suppose the temperature of that reaction we will change from 27 degrees Celsius to 50 degrees Celsius. Okay, the question is that कि मैंने आपसे बोला कि सपोज कोई भी एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे हुआ और वहां पर टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, बट सपोज आपने क्या किया, टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया. नाउ सपोज वी इंक्रीज द टेम्परेचर फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस. विल एनी चेंज अकर इन इक्विलिब्रियम? प्लीज टेक्स्ट मी, बहुत ध्यान से बताना. कोई एक रिएक्शन है ना, रिएक्शन occurs at 27 डिग्री सेल्सियस और ये इक्विलिब्रियम है ना, एनी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन है ना. इफ टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस, व्हाट द चेंज इन इक्विलिब्रियम? विल एनी चेंज विल ऑब्जर्व? Will any change come in equilibrium? अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा करके 27 से 50 डिग्री सेल्सियस कर रहे हैं तो क्या इक्विलिब्रियम पर कोई चेंज आएगा? Will any change come in equilibrium? Please. Yes, very good. शाबाश, बहुत बढ़िया आनंद, बिल्कुल सही जवाब है. What about other student? बाकी क्या सोचते हैं?
व्हाट इज द रिस्पॉन्स फ्रॉम अदर स्टूडेंट प्लीज। ये बहुत मजेदार सा टॉपिक है। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, कोई चेंज कर दिया, सो विल एनी चेंज अकर इन द इक्विलिब्रियम? ओके, वेरी गुड। निधि ने बोला कि बढ़ भी सकता है। एक्चुअली निधि, वी हैव टू चेक माय डियर। अभी हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, बट हाँ ये डेफिनेटली है कि अगर आपने टेम्परेचर में चेंज किया तो इक्विलिब्रियम पे कोई ना कोई चेंज जरूर आएगा। So now the next topic is that factors affecting the equilibrium. Okay, that part now we have to discuss, and this is the last topic of the chemical equilibrium part. ये chemical equilibrium का last part होगा, and then we will start our ionic equilibrium. तो फिलहाल अभी एक दो दिन लगेंगे इस टॉपिक को पूरा खत्म होने में। हाँ, बट ये जरूर है कि factors affecting the equilibrium is the last topic of your chemical equilibrium part. ionic बचा है। So the next heading is factors affecting equilibrium. Factors affecting the equilibrium. Okay, now this topic we have to start. Factors affecting the equilibrium. ठीक, तो सबसे बड़ी बात ये है कि how the equilibrium can be affected. Anybody can text me how many total factors are there? Please try to think. Please try to think and tell me. कितने ऐसे factors हैं जिससे equilibrium affect कर सकता है? Any one of you? जैसे चलो टेम्परेचर तो मैंने ही बोला है तो पहला मैं ही लिख देता हूं, टेम्परेचर। First already I discussed with you, so I wrote about the temperature. What about others? Can you think? What are the factors by which equilibrium can be changed, can be decrease, increase, whatever? Anybody can text me? Okay, very good. Kalyani wrote pressure, बहुत बढ़िया, शाबाश। रिया wrote the concentration, very good, शाबाश। तो दो आंसर और आ गए, एक प्रेशर अपने को पता चला और एक कंसंट्रेशन पता चला। वेरी गुड। ठीक, टेम्परेचर, प्रेशर एंड द कंसंट्रेशन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। टेम्परेचर, प्रेशर एंड द कंसंट्रेशन, दोस आर द वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना। एंड देन दो और भी मजेदार से पार्ट है, एक है कैटलिस्ट एंड एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। ठीक, anybody can text me? Okay, very good. Actually Pratik, you wrote the pressure, volume and number of moles. So Pratik, let me clear my dear, number of moles का मतलब कहीं ना कहीं आप वहां पे कंसंट्रेशन ही बढ़ा रहे हो, है ना। तो आपने अपना आंसर हटाओ मत, your answer was right, absolutely right, but वहां पर number of moles की जगह वो कंसंट्रेशन पे, क्योंकि number of moles upon volume ultimately concentration बन जाएगा। प्रतीक, is it okay to you? प्रतीक, शुभम यादव आज विद अस, बहुत दिनों से शुभम यादव जी नहीं आ रहे हैं। ठीक, इनर्ट गैस एडिशन, वेरी गुड। सो दीज आर द टोटल 5 फैक्टर्स आर पॉसिबल। These are the total 5 factors are possible by which equilibrium can be changed. There is an effect came into the equilibrium, but anybody can text me what is the role of the catalyst in equilibrium? What is the effect of catalyst on equilibrium? Will equilibrium change by the addition of catalyst? Anybody can text me. Will any change occur in equilibrium while addition of a catalyst? अगर हम कैटलिस्ट को बढ़ाते हैं, ओके, वेरी गुड निधि, शाबाश, बहुत बढ़िया। व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोगों का क्या कहना है भाई? ओके, यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो निधि, अनम, रिया, आशुतोष, भूषण, तन्वी, सीमन। प्रतीक, तुम्हारा आंसर गलत हो गया है। रिएक्शन फास्ट नहीं होता, स्लो भी नहीं होता। There is no any change on equilibrium while addition of a catalyst. ठीक है ना? Because catalyst can affect only the rate of the reaction. Catalyst can never affect the equilibrium of the reaction. है ना? So no effect on equilibrium. ठीक, तो मतलब इससे तो अपने को पढ़ना ही नहीं है, तो बेकार हो गया।
तो बेकार हो गया, है ना। कैटलिस्ट को लगाने से इक्विलिब्रियम पर कोई फर्क नहीं पड़ सकता, ठीक है। सो ओनली दीज 4 फैक्टर। हालांकि इनर्ट गैसेस भी आप क्या बोलते हो कि जो इनर्ट गैसेस है वो रिएक्ट नहीं करती, बट यहां पर 2 कंडीशन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। इनर्ट गैसेस के मामले में भी 2 कंडीशन है, एक है एट कांस्टेंट प्रेशर और एक है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। समझे ना आपको? अगर आपने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया तो मतलब कंसंट्रेशन नहीं बढ़ने दिया, तो 2 अलग अलग कंडीशन पे इनर्ट गैस को बढ़ाने पर फर्क पड़ता है, ठीक है ना। इनर्ट गैस का मतलब पता है कि वो रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन सीधी सी बात है कि अगर आप बहुत ज्यादा मोल्स बढ़ा दोगे, तो कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन, जो रिएक्शन मिक्सचर बनेगा उसको वो चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। तो बताऊंगा मैं क्या है, बट बेसिकली दीज 3 फैक्टर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। These 3 factors are the most important at which equilibrium change a lot, है ना। टेम्परेचर को बढ़ाने से, घटाने से इक्विलिब्रियम पे फर्क पड़ेगा, प्रेशर को कम ज्यादा करने से फर्क पड़ेगा, और कंसंट्रेशन। So these 3 factors are very much important, my dear. And now please remember that the effect of the temperature, pressure, concentration can be explained by a principle which is called as Le-Chatelier's principle. ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल, है ना। ये एक साहब है जिन्होंने बताया था, ठीक है ना, इन्होंने बताया था LE होगा, सॉरी, ठीक है ना। सो विद द हेल्प ऑफ द ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल वी विल डिस्कस द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, प्रेशर और द कंसंट्रेशन ऑन एनी इक्विलिब्रियम, ठीक है साहब। तो मतलब ये जो ली-चैटलियर्स साहब हैं, ये हमें सिखाएंगे कि अगर किसी भी इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर बढ़ा, घटा, प्रेशर कम ज्यादा हुआ, कंसंट्रेशन हुआ, तो व्हाट द चेंज विल कम। चेंज होने का मतलब देखो बहुत मजेदार सी बात है। मैंने आपसे बोला कि सपोज अगर ये मार्कर का मैं बात करता हूं, अभी ये मार्कर इक्विलिब्रियम पर है, मैंने बोला कि अगर मैंने इधर टेम्परेचर बढ़ा दिया, या फॉर एग्जांपल ये सी-सॉ का एग्जांपल ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने राइट हैंड साइड में अगर ज्यादा लोड कर दिया तो आपको पता है ये उठ जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम पर चेंज आ गया। अब अगर मुझे जब वापस इक्विलिब्रियम पे लाना है तो क्या करना होगा, इसको, या क्योंकि ये तो चेंज नहीं कर सकते, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा। सो दैट पार्ट नाउ वी हैव टू डिस्कस कि whenever the effect of the temperature, pressure or the concentration take place on any equilibrium, then the equilibrium will shift which direction. How we have to just discuss the change on that. Okay, so that's all for today, my dear, because Lee-Chatelier principle is a big topic, है ना। It's completely take 30-40 minutes. तो अगर मैं आज पढ़ाऊंगा तो 5-10 मिनट में आएगा तो रिदम टूट जाएगा। So better I will discuss the Lee-Chatelier principle tomorrow with you. Okay, so the tomorrow lecture is the most important, बहुत मजेदार लेक्चर है, IIT JEE और नीट के लिए बहुत जबरदस्त लेक्चर होगा कल का, ठीक। And tomorrow I hope so your chemical equilibrium part will be finished. Okay, so thank you so much, dear. Goodbye, take care, and inform others also कि please join the class the regular basis. It's very very much important, ठीक है ना। चलो, thank you so much, dear. Goodbye. Tomorrow again we will meet.